Hello, Zava. What's Hi, up? all good. How are you? Good, good, good. Just lazy day today. Yes, it's a crazy day. And how's your quarantine going on? Mine's quarantine is like sleeping, eating, playing. Then sleeping, eating, playing. Same thing and repeat, right? Yeah. So what's happening? How's the day? Same thing. It's just like this lockdown is teaching me how to cook, which I didn't know. चलो फ्यूचर हस्बैंड के लिए अच्छी चीज है. Actually, and all maids, I'm sure in your house also, all maids, drivers, everything, everybody is cut off. Nobody No is one is allowed. there. No, but even not a single delivery boy. So we have to do all our household works by ourselves. It's a good workout though. Workout for me? No, no, no. I'm full on gharwas mood. No workout. Just I'm chilling, just eating, sleeping, playing with my pets. That's Okay. it. Yeah. So you're practicing or these days? No, no, we can't do anything. Like, we can't even go out. I'm just proper lockdown. Like, I'm just following that proper lockdown. I'm not leaving my house. I'm not stepping out my house. That's the best thing actually. We can sacrifice 20 days for our betterment. Yeah, we have to follow all these things because every day cases are increasing. That's really I sad. think today's is like 1466 might be. I think in Maharashtra we are already 350 plus now, and it's like 50 to 60% per day. And they're following so strict rules here. I know, it's just BMC is doing fab job, and we can't step out in like outside your our colony. Yeah, yeah, you guys. Proper lockdown is like, means like you can't even step out from your house. That's the Oh my meaning of the god, lockdown. yes, and to buy groceries and also like only your guards can go. They can buy and bring it. You Yeah, just for that, for my mom dad is going because, how yeah. sweet, how sweet. They're like the Shehenshah. They are not letting me go out. So what do you feel? What do you want to say to people about this disease which we are dealing with right now? And it's quite a serious matter right now. And yeah, फॉर मी लाइक आपको यार इस चीज को फॉलो करना चाहिए. अगर 99% लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो 1% क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अगेन इवन मेरी लाइफ में जब भी लाइव आता हूँ तब भी यही बात होती है कि आप लोगों को तब भी बाहर देख सकते हैं. पर बाहर जाने ही क्यों है जब आपको पूरा रेस्ट दिया जा रहा ये है घर में बैठे बैठे? आपको क्या करना है? आपको 21 दिन तो घर बैठना है. जब आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तब आपको छुट्टी चाहिए होती है. अब आपको छुट्टी मिल रही है तो आपसे घर नहीं बैठा जा रहा. yes. ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर ही ये पूरा लॉकडाउन लगा है. पूरे 130 करोड़ लोगों के ऊपर मतलब ये लॉकडाउन लगा हुआ है. तो आप इस चीज को समझना चाहिए क्योंकि ये छोटी इतना इजी नहीं है. इतना इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए. अगर आप I इटली think देखेंगे, यूएस देखेंगे तो काफी yeah, काफी चीजें मुझे सामने आएंगी और आपको पता लगेगा. मुझे लगता है कि जैसे हमें पता है कि हमारे जो जनता है मैक्सिमम परसेंट देर फ्रॉम लाइक little backward places and little uneducated to understand this disease. They're taking little time or maybe like that. You know so to understand this, they're taking time to what is lockdown actually is, to educate themselves. And I think that's why this all things are happening all around. We're seeing people, and but we have seen many educated people also around all the time. I see people roaming around and खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. अभी भी I'm sure that parents are allowing them to play, and yeah, which is कई लोगों के really sad. कई कई लोगों के लिए ये लॉकडाउन 21 दिन का ऐसा लग रहा है गर्मियों की छुट्टियां. कि कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया. आप अपनी सोसाइटी में खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये कोरोना वायरस फैलता किससे. आपको वो चीज भी जाननी जरूरी है. यस यस, मुझे लगता है सबको एक बार थोरोली इसका एजुकेशन लेना चाहिए, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद खत्म हो जाएगा. मैं नहीं मानती ये, क्योंकि हमें और 3 महीना अपने आप को उतना ही बचा के रखना चाहिए जैसा अभी हम है, राइट. एंड
जैसे हम लोगों ने कभी ऐसे हाइजीन फॉलो नहीं की, इतना स्ट्रिक्ट हाइजीन, सो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई थिंक हमें माइंड पे वो बिठा लेना चाहिए कि टू प्रॉपर मेक योर हाउस क्लीन एंड साफ सुथरा रख के। या या चलो इससे एक चीज तो होगी, लोग साफ सुथरा रहने तो लगेंगे। ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। actually, but nature wise it is actually doing great. I mean, like, I'm seeing everything is या so clean, air दिल्ली is so साइड में clean. बहुत टाइम के बाद मतलब एयर क्वालिटी 44 के आसपास पहुंची है। Wow. और पूरा स्काई इतना साफ है, इतना ब्लू दिख रहा है पहली बार, वरना तो कोई चांस ही नहीं है। दिल्ली में तो बहुत जरूरत थी ये। हाय आप गुरकिरत। आप मान गया गुड़गांव में ब्रो। हो ना अभी? या आई लिव इन गुड़गांव। ओके ओके ओके। आई लिव इन माय फैमिली एंड आई एम हैप्पी। बट अगर नाइस। आप हरियाणा के गांव वगैरह साइड जाएंगे तो वहां पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पे नॉर्मल लाइफ चल रही है। हाँ, या I mean they are not still getting it properly. नहीं मतलब घर पे रह रहे, लेकिन वहां पे कोई ऐसा डर नहीं है, लोग फिर भी शाम को थोड़ा घूमते हैं जैसे, हाँ, क्योंकि वहां पे व्हाट द पीपल डू, दे गोइंग टू खेत एंड ऑल। तो वहां even पे लोग फार्म my वगैरह में रहते हैं। हाँ, true. For them it's a, I mean, as usual life. Because या I'm, yeah, even my family, they're in Guwahati, and it's the same thing, but they are following, because there is not a single case yet. I think one case is only there, but still they're, day by day it's becoming strict there as well. So let's see. still we can control all this thing, because compared to other countries we just have only 1400. Yes, yes. Even some countries they cross like more than 1 lakh 70,000, like 80,000. I really feel really bad about, like, especially Europe and now US as well. Yeah, And yeah, so how you are, exercise wise, immune wise, how you are protecting yourself? I mean, I'm eating full on mom and food. Like after so long, I got this opportunity. So and my sleeping pattern is totally changed. I'm sleeping in the morning, then waking up like 2 or 3 in the afternoon. I think So you at guys least hardly get time. at least आधा मेरा दिन निकल जाए ताकि मैं ज्यादा बोर ना हूँ। Seriously, yeah. So I just watch some movies, some series, I'm or I tired play of games. watching this. I'm tired of watching like same series and movies. So now I started cooking. I was just like, I will Yeah, cook. And how bad luck it is. Nobody is there to taste my it's okay. You can आस पड़ोस में तो दे ही सकते हो, घर के बाहर थोड़ा बहुत फ्लैट में तो। अभी अच्छा बने बुरा बने खुद ही खाना पड़ रहा है। ये चीज तो है, बट इट्स गुड, लाइक एटलीस्ट कुछ न्यू न्यू चीजें आ रही है लाइफ में। कभी सोचा नहीं था कि इतना फ्री कोई होगा, Mhm. बट इट्स गुड, वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। Yes, let's hope for the best. And I think abhi medication wise be we are I mean they're doing a lot. I mean people are raising funds, and there are lots of या facilities doing. I have seen one train they have converted into या hospital. Yeah, that's a very nice thing. Very interesting stuff. Even like, even to, if we need to isolate them also, we can place the train somewhere. Such a movable stuff. It's such a nice idea. I find it very interesting. ट्रू। So, So and you want to take some question from fans? Don't abusing thing. there are lots of, okay, मैडम हिंदी में बोलो। Okay, हिंदी People में are बात asking when is your marriage? करो। When is your marriage? It's for you, I'm sure. For you, Baba. I don't know. I'm not even in a relationship only, so I don't know about marriage. It's like quite far. I don't know. What about you? I don't know. It Okay, I might be think it's better. surprise for everyone. I think it's better. Like, enjoy yourself nowadays. Yeah, I mean, true. being with family in quarantine is like the best thing. I'm like missing a lot. I'm like, sometimes like I feel like if they're here.
would have been much easier for me, you know, to pass the time. One of your fan club, they are keep sending you message. Zara Yasmin fan club 01. Okay, hi. Sir, huge respect. Tell Thank me, you. yeah, tell me something about yourself. I mean, like, your fans About are in cricket or what? what kind of a person you are, what kind of mood you generally prefer, how you pass your time, generally. I'm I'm like that type of guy, मतलब मस्ती वाला। तो मुझसे एक जगह टिक के बैठा नहीं जाता है। तो मेरे को मस्ती चाहिए इधर से उधर, या किसी की टांग खींचना है या कुछ करना है। थोड़ा सा शाई टाइप हूँ, थोड़ा सा इमोशनल टाइप हूँ। तो या Nice. बट लेकिन अगर मुझसे ऐसे शांति से नहीं बैठा जाता, मुझे कहीं ना कहीं मस्ती करना है। किसी का लाइव चल रहा है तो मैं उसमें घुस जाता हूँ। आजकल वो हाउस पार्टी चल रहा है तो मैं उसमें किसी का भी ज्वाइन में, किसी भी ओपन होता है मैं घुस जाता हूँ। मतलब हर जगह मुझे टाइम पास मस्ती करनी, क्योंकि Are अब you doing video parties, video calls with your friends, or या दिस द ओनली वन ऑप्शन वी हैव, बिकॉज that's what? मैं ज्यादा मैसेज वाला बंदा नहीं हूँ कि टाइप करते हो वेट करते हो। बेटर आप कॉल कर लीजिए, तो वो ज्यादा बेटर है। So I have seen few videos of yours on TikTok. दैट्स आई रियली एंजॉयड टिकटॉक। मतलब पहले इतना नहीं था, 3 मंथ्स पहले ही मैंने स्टार्ट किया। तो आई रियली लाइक इट, क्योंकि मैं देखता हूँ दिन में वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो सम वीडियोस आर सो फनी। तो मतलब पूरा प्रॉपर टाइम पास हो जाता है, एंड आई रियली लाइक सम पीपल वीडियोस। एंड बट मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है कि लोग ना अब थोड़ा कोरोना के ऊपर फनी वे में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक Actually, वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई फैमिलीज ने कुछ देखा है कि उनकी फैमिली में किनकी डेथ हुई है, तो वो चीज़ देखते हैं तो गलत है। आपको मैसेज देना, आप अच्छा मैसेज दो। पर ये कोरोना पे वीडियो बनाना अगर कम, मतलब बंद ही कर दो, क्योंकि ये कोई मजाक वाला थिंग नहीं है, इट्स वेरी सीरियस थिंग। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है जब से शुरू हुआ है इनिशियली द मीम्स पेजेस, सब लोगों का पहला फोकस यही है टू मेक इट अ जोक and then to make fun of it, but we should take it seriously first to understand it. And I, every day there are lots of WhatsApp messages. या I wake up and I see like, oh god, this is all memes jokes on corona. It's या just like, okay. अब हमारे चैट पे भी राशिद खान भी अभी आ गया है। ही इज वेरी लाइक आई लव टू वॉच हिज बॉलिंग, वो भी लेग स्पिनर है। तो वो अफगानिस्तान से है। तो Hi. हाँ, तो मतलब उनकी बॉलिंग इज लाइक डिफरेंट बॉलर, मतलब उनका लीग ही अलग है। You have many fans for you as well as a bowler, right? If I'm not wrong, व्हाट यू सेड? your bowling skill, I mean, you have many fans for that, if I'm not wrong. बस भगवान की दुआ है और That's इन लोगों का प्यार है बस। so. What's plan after this lockdown? I mean, like anything not which I don't know, I just want to go out for like for 3-4 days। I want to chill, I just want to meet my friends and all। yes, दो तीन yes, दिन दिन तो मैं घर रहने वाला नहीं हूँ फॉर श्योर। that हो is गया। like seriously. I'm feeling like कि मैं क्यों वेकेशन में नहीं गई, but अभी लग रहा है अच्छा क्या नहीं गई, क्योंकि जितने लोग बाहर से आए हैं वो लेके आए। You never know. So I had a plan to go to Dubai in Jan after my birthday, and I cancelled it. And I'm glad I cancelled it because everything happens for a reason. Otherwise, you never know. कहाँ से, it's so risky. It's so easily transmittable. I think it will take another 2-3 months minimum, for sure। Yeah, until unless we get a vaccine. So Yeah, uh, I don't know. hope, I wish we get that. yeah, as soon, but like not us, like whole world, like क्योंकि ये एक ऐसा है कि अगर एक कंट्री में हुआ देन इट स्टार्टेड अगेन, इट विल स्टार्ट अगेन, लाइक सो आई थिंक जब तक ये पूरे वर्ल्ड से नहीं खत्म हो जाएगा तब तक इट्स वेरी रिस्की टू गो आउट। Also, I want to save the people who are watching us. I mean, they should keep doing their homeworks. I mean, घर सफाई and all that stuff.
which is like very good to warm up yourself. And जितने भी लड़के हैं वो तो खाना बनाना सीख सकते हैं भाई, तुम्हारी वाइफ वगैरह खुश रहेंगी, या जिनकी शादी होगी है वो हाँ इस पे यार, तो मतलब हाँ यार, थोड़ा सारे हस्बैंड्स को खाना बनाना चाहिए अभी, इट्स द राइट टाइम, तो उनकी वाइफ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, और उनका वर्कआउट भी हो जाएगा। बिल्कुल। एंड एक और अपार्ट आ फ्रॉम, गया है, एक और आ गया है हमारा इंडियन टीम प्लेयर मिस्टर ऋषभ पंत। हेलो ऋषभ। हाउ आर ऋषभ पंत सर, यू आर सो फनी सर। इवन इज अ वेरी फनी गाय। So you वहाँ guys वन are, शेखर सिन्हा ने बोला कि मैम कैन यू डू माय होमवर्क। which homework? Oh, his homework. Okay. या I don't mind. I mean, like, I'm passing my time. I'm just thinking what to do. I don't mind. हेलो सिमर, किंग विशाल मतलब देर। एनी क्वेश्चन फॉर Zara ma'am, you guys write down here. I can see only waves. It's okay, honey. I'm not It's, funny. yeah, I can read that. Rishabh Pant. Yeah, bro, you're very funny, bro. After clean shave, you looking so like so handsome. इसने अभी 3-4 महीने के बाद पूरा क्लीन शेव किया है। किसने, आपने या ऋषभ नो ने? नो नो, ऋषभ ने। Okay. 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 Even Kuldeep is like my brother, like partner in crime is here, Kuldeep Yadav. Okay. 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 So So people are he's from joining. So I Delhi. can see that people, no, Kuldeep is from Kanpur Okay. and Rishabh is from Roorkee. Right now he's in Roorkee with the family, but he stay in Delhi alone. लड़का बड़ा हो गया। I can understand. Living alone is like, it's a responsibility altogether. I'm not gonna say anything. मेरे घर वाले नीचे ये देख रहे हैं तो I'm not gonna say anything. So have you ever stayed alone? Yeah, I stayed alone for 10 years. I just shifted now in with my family in November only. Okay. Okay. So yeah, I have So full it's experience of staying alone. I miss Delhi sometimes because I completed my graduation there only, Noida. That's yeah. Uh, So yeah, yeah, you pass so out your schooling in from Delhi only. yes, my whole schooling, college life. Sorry, yeah, BTech there, and हो गया start. ये दोनों start हो गया, ऋषभ and Kuldeep. हाँ, in Bangalore. No bro, and I live in Gurgaon only. Thank you Kuldeep. तो ये भी so अभी Tara, where सब are you? Huh? what you said? Somebody asked where I'm from. So She's from Guwahati. I've three places, three places. Guwahati, Delhi, Mumbai. No, Mumbai. Yeah. Oh, even my sister is here, Giddi, my real sister. अभी वो अपने रूम में है, वो हमारा लाइव देख रहे थे, लाइक इवन मैं भी यहाँ पे हूँ। मैं कहा पता है आप यहाँ पे नहीं, आप 1.5 महीने से इस घर पे हो। That's so cute. So where she stays otherwise? She's live in Melbourne right now. She's married. My both sister they live in Melbourne. They both married. तो ये दीदी So आए you थे have 20 days के लिए, पर लॉकडाउन हो गया तो अब वो 1.5 महीने से इधर ही है। मैं तो मोदी सर प्लीज एयरपोर्ट खोल दो यार। सीरियसली यार, आई मीन, लेकिन आई थिंक आपके सिस्टर को उसके बाद भी रहना चाहिए कुछ दिन घर, बिकॉज एकदम नहीं, लॉकडाउन आई थिंक खोलने से ही, when she's going back तो she have lockdown for 14 days even there. oh my god, that is like Yeah, again quarantine at home. yeah, That's the, I think, law, I think, yeah. everywhere. It's a law. Yeah, even some people coming from outside to India, they have to stay 14 days at home only. Yes. But I feel after 21 days also we shouldn't be back to our ekdam normal life, Yeah, because I feel the toll will be little more at that time, because uh, day by day it's yeah. increasing. Like incubation period will be more. I feel, I don't know. It's my opinion. Yeah, yeah. Some people is depend to person. Like some हमारे जैसे लोग तो लॉकडाउन के मतलब जैसे लॉकडाउन खत्म होगा रात को 12 बजे गाड़ी में बैठे होंगे कि जैसे ही 12 1 को निकल जाओ। That way तो yeah, of course, if you feel like कि okay, जैसे जेल से छूट गया सब लोग बाहर. हमारी दीदी But मैसेज we yes yes I will stay few more days with Yuzi.
Okay. That's so I know sweet. that You another should two ask her weeks. to stay back. She's staying another 2 weeks. Lockdown is till 14th. So 2 weeks more. Enough. True. So, like your both sisters are there. I mean, at home now. My जो मुझसे बड़ी दी है, she's here only. सबसे बड़ी दी, she's in Australia. Okay. Yeah. So, yeah, I feel so. Whenever you go out, you haven't gone out from the lockdown yet, ever? No, not yet. Single day? Not No, a no, single day. no, no. Nice. I went yesterday with a bahana of groceries, just to No, buy I'm something. not allowed to go out. The मैं policeman just in front of my house, he was asking me, "Ma'am, what do you want to do?" So I was just like, "Sir, सब खत्म हो गया घर पे." So actually, I wanted to buy some pasta. So I went out. I saw people. I mean, I want to suggest few things to people. Uh, yeah, Not only sanitizers. I think we should wear masks also when we are going to yeah, markets and all that yes, stuff. Uh, some people are using very normal masks. Please spend a bit and at least buy the protected ones, which are properly yeah, protected. And the gloves we should use more than sanitizer. I think that is more helpful, uh, hmm. you know, to prevent it. Yeah, But I think it will take time for people to be properly coated with protections. yeah, true. More of Some a people, like, yeah. some people are messaging. पिघलना नहीं है यूजी ब्रो आई एम वेरी सच लोंडा नहीं पिघलेंगे और इट्स Okay, फनी I'm not reading only. I can see like jaldi 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 the people I can see Okay, that. let us let us ask. सब आपके लिए है. So it's better you. अरे ये सर please go live with Rishabh Pant sir Rishabh Pant खुद ही नहीं आ रहे I asked him so many times maybe some people can't afford expensive mask good Gurkirat you are right bro क्योंकि some people can't you know afford those type of mask and sanitizer and all so I think Yes, I agree. So, but some people can't afford. That's a fact. I feel if we can help in yeah our capacity, surrounding us, like our guards, our yeah vegetable that's why I'm doing delivery side to boys. side that's why I'm doing side to Yes. side so yeah Even me too. I have bought like boxes of masks and hand gloves. Whenever I see somebody, I ask my guard to give them, so that we can't obviously help everybody, but we can try our bit to whoever in front of us. We can just help them a bit. true So the main point is they're not educated. That's the thing. They're not educated how to use it. Even I have yeah seen many people wearing it till here. yeah It's like they're not, covering their nose. It's still here. because it's happened So like it's if you're wearing first time it's so uncomfortable because I remember I was coming back from New Zealand so I was in Singapore yeah, so it was so uncomfortable like sometimes you feel like you're not able to breathe so but you have to wear you have no option it's good for it's only for your safety undoubtedly it's very suffocating after some time, and yeah the elastics goes like this. But we have to deal with it. I mean, if we see our frontline doctors and all this, they're wearing it for the whole fucking day, and it's like crazy. yeah, So yeah I've seen some videos some they got some oh, mark here even it's like bluish and all that stuff, hats and off to them yeah off, more respect hats to off them actually, and they are actually more into risk than us. yeah And if they are doing it for us, then of course it's our responsibility to do our true bit, staying at home at least. yeah so So what's your plan after this I am just listening to music. I'll cook some coffee, read some books, then again okay cook my dinner. Then watch some series. So I've done with my workout now. So yeah, that's the same life. So in the morning I wake up, I feel like same life. It's
how to pass more, it's very difficult at the same time. And I'm True. sure many people are struggling with frustration, anxiety, emotional turbulence. I'm sure. Yeah, So yeah, I just have a message for them to keep your calm, be patient, and talk to your loved ones and to your family, and let us yeah. fight together Stay and don't safe break. and please stay at home. Yes, Please, this matter of another 2 weeks. another 2 weeks. तो स्टे एट होम. लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन. घर से बाहर भी मत निकलिए प्लीज. सिर्फ घर पे रहिए और कुछ मत करिए. अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करिए. अपने पेट्स के Yes, साथ खेलिए. खाना बनाना सीखिए. घर का काम करिए. पर प्लीज घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि आप जी. अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी खतरे में डालेंगे. इट वाज नाइस टॉकिंग टू ज़ारा. कीप इन टच. Same here, and या I'm also. या you can after me you can talk to your fans after for some Yeah, time. Yeah, I'll they take are five waiting for minutes. that only. See Definitely. you. Thank you Bye so bye much for everyone. joining me. Take Thank care. you. Bye. Bye. My pleasure. Bye. Bye. Take care. So, guys, um, I'm good. So, I want to answer a few questions of yours now. I've seen many messages to come live. So finally, I thought, why not? And ask some questions now. Hi, Ankit Mishra. Hi, Avinav. Hi. I hope हिंदी में बोलो. पहले आप पूछिए, मैं हिंदी में बताती हूँ आपको. Would you please tell me about your glamorous face? Um, is it? Well, thank you. खाना खाया? हाँ यार, अभी खा लिया, बना भी लिया. पहले क्वारंटीन से पहले तो मुझे पता नहीं था कि चावल भी कैसे बनाया जाता है. अभी 2 हफ्ते में वक्त ने सब कुछ सिखा दिया. खैर अच्छा ही बना रही हूँ सो फार. सो या किसी दिन मौका मिले तो आप लोगों को भी खिलाऊंगी. टेक माई नेम डैनियल. हाय. सो आप लोग कैसे अपना टाइम पास कर रहे हो? I keep seeing, I keep posting my pics and keep asking you, just to pass some time, just to kill some time. आप लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी शायरीज लिखी थी and I really love them a lot. And take my name, Farad. Which food do you like the most? Yeah, I used to like. Now so I have to eat salads and Indian food, curries, whatever I can cook. Right now, I have no options, but I like Italian. I sometimes Mexican, Chinese, yes, but now I don't. Now I don't. But I used to like. Bus, take my name, Suniyat, Sandesh. So, गाइज आप लोग आई एम श्योर सब लोगों को पता है क्या हो रहा है. मैं बस पर्सनली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके, जिनकी कैपेसिटी है, अपने सराउंडिंग की भी मदद कीजिएगा. क्योंकि जिन लोगों को समझ नहीं है इस चीज़ का, उनको प्यार से समझाइएगा. और अगर आपको देखे आपके कॉलोनी या सोसाइटी में कोई बैगर्स है, कोई यू नो ऐसे लोग हैं जिनको खाने पीने की या कुछ मदद की ज़रूरत है, तो आप अगर 100 रुपये भी दे दो तो उनके लिए काफ़ी है. जस्ट एंड
I am doing my part. However, we are not at all allowed to go outside our gate. But yes, whatever possible I'm doing. And I suggest you all, and stray dogs, stray animals, उनके लिए भी जब भी आपको कुछ देखे तो थोड़ा बहुत बिस्किट्स बिस्किट्स दे दिया कीजिएगा. And I love your nail paint color. Thank you. I'm just playing around with my colors at home because I have nothing to do. So yeah. And also I was saying that अपने आप के लिए पूरे दिन घर पे बैठ के मत रहिएगा. कुछ यू नो बॉडी वर्कआउट जैसे थोड़ा सा वार्म अप, सीटअप्स कर लीजिएगा, पुशअप्स, कुछ भी फॉर द बॉयज, फॉर द गर्ल्स इन फैक्ट, फॉर जंपिंग या कुछ भी, या फिर थोड़ा सा अपने स्टेयरकेस में ही अप एंड डाउन, या अगर आप अलाउड हो तो थोड़ा बहुत थोड़ा डिस्टेंस रख के थोड़ा वॉक कर लीजिएगा अपने सोसाइटी में, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे. और जो अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपकी ऑफ कोर्स ये सब बीमारियों से फाइट करने के लिए इट विल बी बेटर फॉर अस. एंड कोशिश कीजिएगा कि सारे वार्म फूड ही खाएं आप, और आइसक्रीम्स थोड़ा सा जिन लोगों की फेवरेट है वो लोग भूल जाइए कुछ दिनों के लिए. और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद हम सभी को एकदम से केयरफ्री हो जाना है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने माइंड में ये रखना है कि यू नो to keep ourselves clean and hygiene and our kitchen clean. एंड जब भी आप बाहर जाइएगा, आप लौटते ही समय अपने वो कपड़े वगैरह चेंज करके आप प्लीज़ टेक अ शावर, सो दैट इफ़ यू get something on your clothes or anywhere also, it just won't infect you and your family. So these are the small steps we should take very seriously. एंड जैसे आप बाहर से खाना वाना लाते हो या कुछ भी लाते हो तो बाहर का जो पॉली बैग है या जो भी है उसको थोड़ा सा वॉश कर लीजिएगा. एंड फूड को, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो गरम बॉइल्ड वाटर से उसको बॉईल करके खाइएगा, क्योंकि इट्स रियली इम्पोर्टेंट. एंड वो वाटर फेंक के खाइएगा. तो कहने को तो बहुत सारे प्रिकॉशंस है, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है और मैं कर रही हूँ जो फॉलो, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिलहाल. और दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि बाहर ना ही जाए अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कौन इन्फेक्टेड है. क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आई मीन सरकार कोशिश कर रही है ट्रेस करने की कि इन्फेक्टेड लोगों को. बट आई थिंक माई डिलीवरी हैज़ कम. So guys, it was nice pleasure talking to you. I'll join you very soon. Take care. Okay? Bye.